Hello everyone, welcome to my new video that is for C++ of class 12th student, that is file. In today's topic we will cover the concept of file. Manually when we talk about a file, so we can say that is a storage place where we store the data. File क्या है? फाइल एक प्लेस है जहां पर हम रिकॉर्ड्स को और डेटा को स्टोर करते हैं. So you can say file is a stream of byte stored on some secondary storage devices. Stream of bytes और sequence of bytes. Streams of bytes मतलब कि कोई भी डेटा होगा that is the collection of bytes. So डेटा को स्टोर करता है सब secondary storage devices में. That is the concept of file. Now what is the need for data files? So in many real life problem require handling of large amount of data. जहां पर large amount bulk amount of data हो वहां हम data कैसे store कर लेंगे. So earlier we use array to store bulk data. The problem with array that is arrays are stored in RAM. So the data stored in array is retained as long as program is running, or once the program is over, the data stored in array is lost. So to store data permanently, we need files. So files are required to save our data on secondary storage devices for future use, as RAM is not available to hold our data permanently. मतलब कि जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं जहां पर आपका डेटा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्रोग्रामिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप एरे का यूज करते थे. जैसे हम कहते थे कि आप जब सपोज स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम स्टार्ट किए तो ऐड 2 नंबर्स, वहां पर 2 वेरिएबल ले लिए इंट ए बी. जब हम ऐड 1000 नंबर, ऐड lakhs नंबर, तो वहां हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज किए. लेकिन एरे जो यूज होता था वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द डेटा इज लॉस्ट. अब आपको डेटा को स्टोर करना है तो फॉर दैट वी यूज द फाइल. तो ये फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डेटा स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते तो भी दिखाता है, अदरवाइज एक फाइल बन जाता है और उस फाइल में आपका डेटा स्टोर होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल इन सी और C++. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन arrays and files. Arrays are stored in RAM. Files are stored on hard disk. Data is stored temporarily in arrays. Data is stored permanently in files. So arrays have fixed size. File can have variable size. Arrays cannot be used to share data between programs, and the files are used to share data between programs. But the basic difference is array का जो है वो डेटा रैम में, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ, डेटा लॉस्ट. लेकिन फाइल्स में अगर आप किसी भी प्रोग्राम को फाइल्स में डाल देंगे वो परमानेंटली स्टोर हो गया, उसको आप फ्यूचर में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट इन C++ स्ट्रीम. फाइल क्या होता है? फाइल होता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दो स्ट्रीम है. इनपुट है डेटा रीड करने के लिए, आउटपुट है डेटा राइट करने के लिए. सो एक्सट्रैक्शन इज इनपुट स्ट्रीम, इंसर्शन इज आउटपुट स्ट्रीम. So the input output system of C++ handles file input output operation in the same way it handles the console input output operations. It uses file stream as an interface between programs and files. So stream is defined as the flow of data. What is a stream? ये क्वेश्चन हमेशा आता है. स्ट्रीम इज सीक्वेंस और बाइट भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रीम इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ डेटा. सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम है. दो टाइप का स्ट्रीम है. एक आउटपुट स्ट्रीम जिसमें आप डेटा राइट करते हैं, और एक है इनपुट स्ट्रीम जिसमें आप डेटा रीड करते हैं. सो आउटपुट स्ट्रीम, द स्ट्रीम विच कंट्रोल्स द flow of data from the program
to the file is called output stream. ठीक है, इसको इस वे में भी कह सकते हैं stream which controls the flow of data from the program, और input stream which controls the flow of data from the file to the program is called input stream. ये प्रोग्राम से फाइल, ये फाइल से प्रोग्राम, इनपुट रीड करने के लिए, आउटपुट राइट करने के लिए. So each stream is associated with a particular class which contains definition and the methods dealing with that particular kind of data. These include if stream and off stream और f stream. दो स्ट्रीम देखिए, एक इफ स्ट्रीम है, एक ऑफ स्ट्रीम है. इफ स्ट्रीम रीड करने के लिए, ऑफ स्ट्रीम राइट करने के लिए, और इसके साथ अलग अलग फंक्शन है, और दोनों मिला के आईओस और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके लिए जो आपका फाइल बनता है वो एफ स्ट्रीम. अगर आप इनपुट स्ट्रीम करना चाहते हैं सिर्फ प्रोग्राम में तो आई स्ट्रीम लिखेंगे. अगर आप प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट करना चाहते हैं तो ओ स्ट्रीम लिखेंगे. लेकिन आप बेटर होगा कि एफ स्ट्रीम यूज कीजिए, ये दोनों इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशंस को हैंडल करता है. सी द फंक्शन ऑफ आई स्ट्रीम, गेट लाइन, रीड क्योंकि ये रीड करने के लिए है, सीक जी, टेल जी, ओपन. ऑफ स्ट्रीम के लिए, ओ स्ट्रीम के लिए पुट, राइट, और सीक पी, टेल पी, ओपन दोनों में आएगा क्योंकि एफ स्ट्रीम आप यूज कीजिए, ओपन दोनों में आएगा. The classes contains in fstream.h are derived from iostream.h. Thus, it is not necessary to include iostream.h in our program if we are using the header file fstream.h in it. Input output in C++. The ifstream class contains open function with default input mode and inherits the function getLine, read, seekg and tellg. The offstream class contains open function with default output mode and inherits function put, write, seekp and tellp from ostream. The fstream class contains open function with default input output mode and inherits all IO function of iostream.h. Now we will see types of data files. Now there are two types, mainly there are two types of data file, text file and binary files. आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, बट ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स इन C++. Mainly there are two types, data files, text files and binary files. So what is text file? So text file store the information in ASCII characters. Each line of text in text file is terminated by special character called end of line, EOL. In text file, some internal translations take place while storing data. So text मतलब ASCII character में स्टोर होगा और each line जो terminate होगा with end of line. Next, binary. Binary files store the information in binary format. There is no end of line in binary file and no character translation takes place in the binary file. So there are two types. एक में ASCII characters, ये आपका क्वेश्चंस आता है कि किस फाइल में ASCII character में डेटा स्टोर होता है, तो वो टेक्स्ट फाइल में, और बाइनरी में किस में, बाइनरी फॉर्मेट में, तो बाइनरी फाइल्स में, और किस में टर्मिनेट होता है एंड ऑफ लाइन से. सो टेक्स्ट फाइल में डेटा आपका टर्मिनेट होता है एंड ऑफ लाइन से. बाइनरी फाइल को जब ओपन करेंगे तो वहां पे आपको लिखना होता है BIN. Now the difference between text file and binary files, ये important question आता है. So text file, in text file various character translation are performed such as /r/t, ये आपका इंटर के लिए होता है,
is converted into \n while reading the file from the file. In binary file there is no such translations are performed. So text file जब handle करते हैं तो \n use करते हैं next line के लिए. So portable. In text file, one can easily transfer text file from one computer to another. A binary file non-portable है, means इस ये binary files are dependent. If the new computer uses different internal representation for values, they cannot be transferred. Storage in text file, when we are store numbers, they are stored correct as characters. Example, if we store the decimal number 42.98676 in text file, it occupies 7 bytes. Text file में ये सारे को और डॉट को भी काउंट करेगा, बट इन बाइनरी फाइल्स इट विल टेक 4 bytes, क्योंकि ये फ्लोट है इसलिए ये 4 bytes लेगा. सी द डिफरेंस स्टोरेज में, ये कैरेक्टर चूंकि टेक्स्ट फाइल में ये आस्की वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट किया तो ये पूरा स्पेस ले लेगा. नेक्स्ट, text files are readable and thus can be easily edited using any word editor. Binary files, no readable, not readable. Storage में it occupies more space due to character conversion and it occupies less space. Accuracy, while reading and writing of numbers, some conversation errors may occur, or is highly accurate for numbers because it stores the exact internal representation of values. Now, how we open a file? In C++, there are two methods of opening file: using constructor and using open function. ठीक है, दो तरह से यूज करते हैं. एक है ऑफ स्ट्रीम, ऑफ अगर आउटपुट है, अगर आपका आउटपुट लिखना है तो ऑफ स्ट्रीम में है तो ऑफ स्ट्रीम फॉलोड बाय अ टैग नेम एंड उसके बाद फाइल नेम, और अगर रीड करना है फाइल से तो इफ स्ट्रीम टैग नेम और उसके बाद फाइल नेम, और उसके बाद एक और क्लॉज है ओपन जिसके थ्रू करेंगे. ठीक है, सो देखते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर. दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वी ओपन ओनली वन फाइल इन द स्ट्रीम. टू ओपन अ फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ desired stream and initialize that object with the desired file name. The statement of stream followed by tag name, ऑब्जेक्ट नेम कह सकते हैं, और डबल कोटेशन में आपको फाइल नेम डालना होगा. जैसे यहाँ फाइल का नाम है abc.txt तो डबल कोटेशन में डालेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे. इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट fout with the class of stream, opens the file abc.txt and attached it to the output stream. For writing similar statement, if stream f in और डबल कोटेशन में फाइल नेम, it will create an object of fin of class if stream. It opens abc.txt and attach it to the input stream for reading. So देखिए of जो है वो राइट करने के लिए है, ये राइट करता है, और if स्टेटमेंट जो है वो रीड करता है. तो if जो ये ऑब्जेक्ट नेम बना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इफ स्ट्रीम ओपन करेगा ये जो फाइल नेम दिया हुआ और अटैच करेगा इनपुट करने के लिए, और ये ऑफ स्ट्रीम आपका इस फाइल को ऑब्जेक्ट को अटैच करेगा राइट करने के लिए. और इस मेथड से ज्यादा अच्छा है कि आप दोनों यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ओपन यूज करना होगा. So this method is useful when we want to open multiple files using single stream. So ये लिखना होगा if stream object name dot open within double quotation file name,
और उसको फाइल को क्लोज भी करना होगा, जो ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज से। इसमें आप देखिएगा फाइल नेम नहीं मेंशन किया जाता, सिर्फ ओपन में किया जाता है। सो बेटर टू यूज द ओपन स्टेटमेंट in while opening the file. That's all from today's lecture. Next video we will cover some more concept of file. Thank you. Bye bye.